Hello students, today we will talk about the formed elements. In the previous lecture I told you that blood has two components. One is the plasma, which is fluid in nature, and second part is the formed elements, and these formed elements are suspended in the fluid, that is plasma. Now 55% part of the blood is plasma and 45% of the blood is made by formed elements. Fine. So formed elements are like RBCs, WBCs and platelets. Fine. Now let's discuss one by one. First one is the RBCs, which are also known as erythrocytes. Why they are called as erythrocytes? Erythro means red. These RBCs contain a red colored iron containing protein called as hemoglobin. That is why these are called as erythrocytes. And these RBCs are the most abundant of all the cells. Fine. And in average, healthy human has 5 million to 5.5 million of RBCs per millimeter cube of the blood. मतलब मिलीमीटर जो ब्लड है हमारा उसमें RBCs का जो कंसंट्रेशन है वो 5 से 5.5 मिलियन तक है. फाइन. एंड RBCs आर नॉन न्यूक्लिएटेड बट they can be nucleated in some mammals. For example, in case of dog, or you can say cats, or even in some camelids. Camelids is the camel family. Not all the camels are nucleated, but some camels are nucleated. But mostly we can say that RBCs are non-nucleated except in some mammals. Fine. Next is the shape. The shape of RBCs is disc shape, or you can say biconcave, and RBCs are formed in a tissue called as bone marrow, and their lifespan is 120 days. After 120 days they get destroyed in an organ called as spleen. Spleen is the part of lymphatic system. Now what is lymphatic system? जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी है. सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका मेन फ्लूइड है ब्लड, और लिम्फेटिक सिस्टम में जो मेन फ्लूइड है वो है लिम्फ. जैसे ब्लड फंक्शंस परफॉर्म करता है वैसे ही लिम्फ भी वही फंक्शन परफॉर्म करता है. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, आपकी सेल्स तक पहुंचाना, वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना, और इसके अलावा जो भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन्हें ट्रैप करना और उन्हें वहाँ से बाहर भगा देना. ये काम है लिम्फेटिक सिस्टम का, और यू कैन से द लिम्फ. फाइन. एंड I already told you about the hemoglobin, that erythrocytes are red because they contain hemoglobin, and a healthy person should have 12 to 16 gram of the hemoglobin per 100 ml of the blood. Fine. And the function of hemoglobin is, we have already discussed in respiration that hemoglobin is responsible for the exchange of oxygen and carbon dioxide. Oxygen will bind with the 4 oxygen molecule, and then oxygen will be utilized by the tissue. As a byproduct, CO2 will be released. Then hemoglobin will bind with the CO2, and CO2 will throw out from the body. Fine. So about erythrocytes we have done that these are most abundant of all the cells. Then their number is 5.5 million. Then they are non-nucleated except in some mammals like dog, cat or camelids. They are disc shaped, formed in bone marrow and destroyed in spleen, and spleen is called as graveyard of RBCs. Because RBCs are destroyed in spleen, that is why spleen is called as graveyard of RBCs. Lifespan is 120 days, and they contain hemoglobin, and the concentration of hemoglobin in per 100 ml of the blood should be 12 to 16 gram, which is the normal range in a healthy person.
Fine. And function of hemoglobin is the exchange of gases. Fine. Now next formed element is the leukocytes. Leukocytes are much more complex in comparison to the RBCs or the erythrocytes. Fine. Leuko means colorless. So these are colorless because they don't have hemoglobin and they are nucleated unlike RBCs, and their lifespan is normally 13 to 20 days, but in case of malarial infection lifespan will be less than 4 days. Fine. Like RBCs, leukocytes are also made in bone marrow, but they also made in spleen, thymus and tonsils. Spleen and thymus, all these are the part of lymphatic system. Fine. They made in bone marrow, spleen, thymus and they destroy in lymphatic system. मतलब यहीं पर बनेंगी और lymphatic system में ये destroy हो जाती हैं after 13 to 20 days, and a normal person has 6000 to 8000 per millimeter cube of the blood. ये WBCs का कंसंट्रेशन है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर. फाइन. एंड ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज द ग्रेन्युलोसाइट एंड अदर वन इज अग्रेन्युलोसाइट्स. These are called as granulocytes because nucleus present in them is in the form of granules or the fragments. But here the nucleus is not fragmented. That is why they are called as agranulocytes. Fine. Now granulocytes are divided into 3 categories. One is the neutrophils, then is the eosinophils and then is the basophils. Fine. And neutrophils are the most abundant. They made 60 to 65% of WBCs. Fine. Then eosinophils are 2 to 3% of WBCs. Basophils are 0.5 to 1% of the WBCs. Fine. Lifespan of neutrophils is 2 to 5 days and of eosinophils is 7 to 12 days. And lifespan of basophils is 12 to 15 days. Fine. Function of neutrophils, these are phagocytic in nature. Phago means eating. Fine. So neutrophils are phagocytic, that means they consume the फॉरेन पार्टिकल्स. जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोब, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, न्यूट्रोफिल्स उसे कंज्यूम कर जाते हैं. फाइन. एंड eosinophils आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस. बेसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम है. जैसे ही कोई एलर्जन, कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी बदले में क्या जनरेट करती है? एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस का मतलब है आपको जलन होना, पेन होना, स्वेलिंग होना या रेडनेस हो जाना. वो कोई डिजीज़ नहीं है. जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में जाएगा तो ये जो बेसोफिल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग दीज केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन. देन दीज केमिकल्स विल जनरेट द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन आवर बॉडी. मतलब ये केमिकल्स आपको बता रहे हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है. जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब किल हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी आपकी खत्म हो जाएगी. इन द सेम वे एलर्जिक रिएक्शन. अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको पता कैसे चलेगा? जब तक आपको उसके सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एलर्जी है. तो एलर्जी भी आपके ही इम्यून सिस्टम का पार्ट है. आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से, पोलन से, किसी भी चीज़ से. जैसे ही वो एलर्जन आपकी बॉडी में जाएगा तो इयोसिनोफिल्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे. फाइन. और बदले में आपका इम्यून सिस्टम और इयोसिनोफिल्स आपको एलर्जिक रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना. फिर आप लोग टैबलेट्स खाते हो एलर्जी के लिए ताकि एलर्जिक रिएक्शन को सप्रेस किया जा सके. जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन ठीक हो जाती है दैट मीन्स वो फॉरेन माइक्रोब आपकी बॉडी में
किल हो चुका है. So allergic inflammatory reaction are the part of our immune system. You can say these are the immunological response. ये आपकी ही बॉडी ने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपकी बॉडी का एलर्जन किल हो सके, आपकी बॉडी का फॉरन जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाए. फाइन. सो दीज आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ आवर बॉडी. Then we will talk about granulocytes. That means nucleus in them is not in the form of the fragments. And granulocytes are divided into two categories, monocytes and lymphocytes. Monocytes make 6% of the WBCs and lymphocytes are 20 to 25% of WBCs. Fine. Lifespan of monocytes is 10 to 20 hours in the blood, and after 20 hours or 10 hours, you can say, within this range, they become swell and then migrate from the blood into the tissue, and then they becomes macrophages, and the lifespan of macrophages is 5 months. Macrophages, monocytes, neutrophils, these are phagocytic in nature. Means they will destroy or they will trap or they will consume the foreign particle or the microbes. बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब ब्लड में होंगे तब तो मोनोसाइट्स होंगे, जब इनका साइज बढ़ जाएगा तो ये टिश्यू में आ जाएंगे, और टिश्यू में आने के बाद हम मोनोसाइट्स को ही क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस. फाइन. नेक्स्ट अ ग्रेन्युलोसाइट इज द लिम्फोसाइट एंड देयर लाइफ स्पैन इज 1 day and 20 to 25% of the WBCs are lymphocytes. Lymphocytes are of two types, that is B cells or the B lymphocytes and T cells. Both of cells are responsible for the immune response. आप सिंपली ये कह सकते हो B cells जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, जबकि टी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए. इसके साथ ही टी सेल्स का एक और फंक्शन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. द ग्राफ्ट रिजेक्शन मीन्स जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो डोनर और रेसिपिएंट हम दोनों का टेस्ट किया जाता है ना. क्या पता डोनर की किडनी है या कोई और पोर्शन है, रेसिपिएंट रिजेक्ट करते हैं ना, तो वो जो रिजेक्शन जो होगा वो किसकी हेल्प से होगा, वो टी सेल्स की हेल्प से होगा, बिकॉज टी सेल्स प्रोवाइड अस इम्यूनिटी कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड बी सेल्स प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमर मीन्स द फ्लूइड. Fine. So B cells will give rise to plasma cells and plasma cells will give rise to antibodies. Fine. Now last is the thrombocytes. Thrombocytes are also produced inside the bone marrow, but from the very special cells produced in the bone marrow known as megakaryocytes. Fine. And their number is 1,50,000 to 3,50,000 per mm of the blood in normal person. They are also colorless because they don't have hemoglobin. They are also non-nucleated like RBCs, and they are having lens shape, or you can say in some cases irregular they are. Fine. Lifespan is 5 to 9 days. After that they destroyed in spleen as well as in the liver. Fine. And thrombocytes or platelets are responsible for the clotting of blood. They release some factors known as platelet derived growth factors, and these factors help in the clotting of the blood. Right? If there is a reduction in the number of the platelets, then there will be excessive loss of the blood from our body. Fine. So this was all about the formed elements.